welcome back to my channel. Hi, my name is Smriti Sharma. I'll be really happy if you take a moment to subscribe to my channel below. So guys, as you all know, I love doing shopping. So it's my first haul video. तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है नायका से. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. आज ही मेरा ये ऑर्डर आया है नायका से. सो इसमें कुछ ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डिस्क्लेमर, ये कोई शो ऑफ का जरिया नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी एक नायका हॉल करना. तो आज फाइनली मेरा ऑर्डर आया है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू व्हाट आई ऑल हैव ब्रॉट. So guys, you can have a look in my box. I have removed all the plastic packaging and all because it take a lot of time. और मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर्ड नहीं करना चाहती, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज वगैरह नहीं दूंगी. I'll just tell you about the product's name and how does it work for my skin. And yes, of course, I'll leave the product prices maybe here or maybe there somewhere down. So without any further ado, let's get started. So our first product is Pond's Light Moisturizer Non-Oily Fresh Feel Cream. It's a very good moisturizer product. As you can see, it's look like this. It's a very good moisturizer. मैंने पहले भी एक बार यूज़ करा हुआ है, तो अब ये मैंने दूसरी बार मंगवाया है. And it's comes in packaging like this. It's a very good product. और Pond's creams are good. I have used them before also. So for a oily skin or for a dry skin also, it works well with both the skins. So if any of you has a oily skin or a dry skin, you can use it. It's a very good product. Our second product is K Beauty Eyebrow Pencil. It looks like this. It has a beautiful detailing on it. I love simple, sober detailing, and it's in the shade Hazelnut. It's a very good brownish blackish shade for all those who don't like so much of dark eyebrows and for those who don't like so much of light eyebrows. I think this is the perfect shade. And for those who love to keep their makeup minimalistic, and it's very easy to carry in a pouch. So just take it, swipe it, and you are done. So our third product is Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. And guys, just to tell you, it's my favorite go-to product. I love this product so much. It settles your concealer, your foundation so well. You can't see any crease down your under eyes after you use this powder. It's very good. It's in the shade light medium 20. So for all the girls who love doing makeup, I highly recommend you this loose powder. It's very good. Fit Me, Maybelline, good job. So speaking of Maybelline as my favorite brand, so I have 2 or 3 more products of Maybelline. So this is the Maybelline Matte and Poreless Foundation. It looks like this. It's a very very good foundation. I'll just show you how it smudges so well. It gently dives into your skin, and see how it works for my skin. You can't even say I've put on a foundation. It's so beautifully gel sent into your skin, and so beautiful coverage it has. It's a very good foundation. It's in the shade Warm Nude 128. Love this product. So the another one is Maybelline Master Chrome Highlighter. It's a very beautiful. I'm so sorry guys अगर मैं बार बार beautiful बोलती रहूँ तो, क्योंकि ये beautiful products हैं सारे के सारे. ये बहुत ही especially for a drugstore makeup product, this is a very beautiful highlighter. Just see, its coverage is so beautiful. So guys, here are some lipsticks that I have ordered. I suppose they are 5 lipsticks, and they are some of high-end, some of drugstore. So let's see. Our first lipstick is MAC Mini Lipstick.
It's in the shade Meher. This is a beautiful pink shade. I hope I can swatch it for you. You can see it's a beautiful pink shade. This lipstick is on some higher side, so it is kind of expensive, but it has a good formula which stays on your lips for quite a time. So I'll say it a good one. So we have one more high-end lipstick. This is the Smashbox lipstick. As you all know, Smashbox is a really expensive product store. So I can say this is it look like. I know you can say that it looks same like Meher, but no. This is ये बहुत अच्छी है. इसका जो स्टे है लिप्स पे बहुत टाइम के लिए रहता है. मैंने काफ़ी बार इसे लगा के मैंने खाना वगैरह खाया है. आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पर ये कभी भी नहीं हटती. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा है. दिस इज़ अ वर्थ पुटिंग मनी ऑन दिस. ये अगर आप एक्सपेंसिव लिपस्टिक भी लेते हो बट अगर वो इतना अच्छा स्टे कर रही है तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट. सो यू कैन इन्वेस्ट इन टू दिस. इट्स इन द शेड गुलाबे. इट्स अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक. सो गाइस, अब जो ये लिपस्टिक है ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है और मैंने ये लिपस्टिक बहुत यूज़ करी है. आई हैव ऑर्डर्ड दिस लिपस्टिक फॉर एटलीस्ट अबाउट 7 to 8 times. I have finished so many of it. It looks like this. It's a Nykaa matte lipstick. It's in the shade Bombay. I'll just show how does it look. I'll just swatch it for you. It's a beautiful nude shade, nude coffee shade. Single word for this product will be gorgeous, beautiful, extraordinary. I love this product. I love how this lipstick stays on my lips. Not forever, but yeah, for quite a long time. Other than till now, guys, you must have seen that I love nude and pinkish shade. So the next one is also nude lipstick, nude chocolate lipstick. It's a Lakme 925. It's in the shade caramel cut. It's again similar to my Nykaa one, but it's a little bit darker. You can see it's a little bit darker from the Nykaa Bombay shade. This is a night lipstick, but just a review for this. It doesn't stay on your lips while you eat or while you drink. So this is a good shade, but ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं है lips पे. It comes out very easily. But yeah, nice shade. This is the mini Nykaa lipstick. It's a drugstore lipstick. It's very easy to buy. It's not expensive at all. It's again a nude, but it's a little shade darker. See, Bombay light, Lakme caramel cut is dark, and this is much darker. This is in the shade. This is in which shade? I don't know. It's not written here. I don't know which is this shade. So this lipstick I got free on my purchase of Nykaa from this. So they have not mentioned the lipstick shade here, but I say this is again a nude chocolate dark lipstick. It is starting to rain outside. I'm so sorry guys, अगर आपको बारिश की आवाज़ आती है तो I can't help it. So our next product is Garnier BB cream. It's like this. My ring light is disturbing me. I hope you can see this. Yeah. On the days I don't like to use foundation and I have no time to put foundation, so I quickly apply this BB cream and I'm ready to go. Nice product. So for this one, again I'll say it's my favorite product because I have been using this product from a very long time. Guys, I love this concealer. It's a LA Girl Pro Concealer. It's in the shade Creamy Beige. I love this product. I love the way it settles on my skin. I love the way it leaves no crease on my skin. It gives a beautiful high definition coverage on your skin, and it's a drugstore. The main thing is this is a drugstore product और कोई ज़रूरत नहीं है Fenty Beauty, Huda Beauty के कंसीलर की. If you have this LA Girl Pro Concealer, इसकी बहुत अच्छी कवरेज है and I
love this product, highly recommended. It's a nice one. So I want to give this primer a try on a drugstore type. Why my ring light is doing this with me? It comes in packaging like this. So let's give it a try and let you know how this works for my skin, not oily skin. I'll let you know. So as I told you, I am going to give a try on the Nykaa primer. So for a makeup fixer, I brought this Faces Canada. क्योंकि जो मेरे पास पहले मैक का था उसमें दैट वाज फॉर द प्राइमर एंड फिक्सर एज वेल, बट अब मैंने सोचा कि मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ प्राइमर और फिक्सर के लिए. तो मैंने प्राइमर के लिए नायका वाला मंगवाया एंड फॉर द सेटिंग स्प्रे आई हैव ऑर्डर्ड दिस फेसेस अगेन माय फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर. सो आई हैव नॉट यूज्ड इट बिफोर, सो आई ट्राई दिस. तो गाइज ये प्रोडक्ट मंगवाने का कोई रीज़न नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कंसीलर है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है एले गर्ल का. बट मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है, मेबलिन का कंसीलर. इट्स अ मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर एंड इट्स इन द शेड 122 सैंड. I want to give this product a try. It comes, you can see the packaging. It has a puffy sort of thing in front of it, so you can apply it easily. So yeah, we'll give this a try too. But I know Elegant is the best. So my almost second last product is this Makeup Revolution palette. It's an eyeshadow palette. It has 45 shades in it. It has all the pink, red, oranges, blue, green, silver. I have heard that it has a beautiful pigmentation. तो गाइज मैं ज़्यादा आई शेडो लगाती नहीं हूँ, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं मैंने आई शेडो से लाइनर लगा रखा है. बट मैं चाहती थी कि मैं अब ट्राई करूँ आई शेडोज वगैरह लगाने, तो मैं हुडा ब्यूटी वगैरह पे इतना स्पेंड नहीं करना चाहती थी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम ट्राइंग, तो आई हैव स्पेंड माई मनी इन दिस रेवोल्यूशन पैलेट. तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. और जहाँ तक मुझे लगता है ये अच्छा होगा क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं कि इसकी पिगमेंटेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है, इसके ग्लिटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. सो येस, आई थिंक इट विल टर्न इनटू अ गुड वन. तो गाइस आपने देख ही लिया है कि मैं कितना सामान मंगवाती हूँ नायका से, और ये अभी मेरा सिर्फ सितंबर के महीने का सामान है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स आई हैव बिकम अ नायका's प्रीमियम मेंबर. Yay! So I have got this mask sheet from Nykaa. It's a preview member birthday gift present from Nykaa. तो जो भी उनके प्रीवी मेंबर्स होते हैं उनको उनके बर्थडे मंथ की शॉपिंग में कुछ गिफ्ट मिलता है. तो आई हैव गॉट दिस कोरियन मास्क. या आई हैव यूज्ड देम बिफोर, सो दे आर गुड. दे आर नॉट दैट गुड बट दे आर गुड. कुछ ज़्यादा खास फर्क मुझे दिखता नहीं है शक्ल पे मास्क लगाने के बाद. There is no as such difference. So guys, this was it for this video. I hope आपको मेरा पहला हॉल वीडियो अच्छा लगा हो. मैंने आई थिंक अच्छा काम किया है एक हॉल वीडियो के लिए. तो अगर आपको और हॉल वीडियोस चाहिए मेरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसे हॉल वीडियोस चाहिए, लाइक शॉपिंग और मे बी ओनली मेकअप. तो और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. आई लव यू सो मच. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे. बाय.